So, a very good morning to all of you. Hope you are all fine at your places. Today, there is a lecture number 9, and again, this lecture is continuation part of the previous lecture that we had started a few days back regarding two-port analysis. You were seen that in case of a two-port analysis, were discussed about the various parameters like we have the Z parameter, which is known as impedance parameter. It is also known as open circuit parameter. It is also called as the journal or a chain parameter. After that, we have discussed about the Y parameter. The Y parameter is known as your admittance parameter, your short circuit parameter. And in lecture number 8, we were discussed about the transmission parameter, that is known as ABCD parameter. And after that, we have discussed about inverse ABCD parameter. Now today we are left with only the two parameters. One is called as G parameter and another is called as H parameter. Now today we will start the G parameter, and after that we will discuss H parameter, and after that we will discuss that what is the interrelation between these two parameters. But before proceeding towards the interrelation, we were discussed about the G parameter. Now, as we all know, every parameter has its certain unique equation. Every parameter. Like if you remember, in case of Z parameter, the basic equation is somehow like V1, V2 is a function of I1, I2. You were seen in case of a Y parameter, the basic equation is I1, I2 is a function of V1, V2, and so on. And you were also seen based upon the basic equation, we can derive the parameter. And when we derive the parameter, we are generally taking you can say that recommendation that after opening the matrix, the signal which are present on the left hand side, whether it is the input voltage, output voltage, input current or output current, we equate to zero. And when we equate to zero, we are getting the four parameters. So another one important thing that you must be have to be remember that whenever the voltage has to be equal to zero, that so whenever you can say that it is audible now. It is audible, beta. That means you have to get the short circuit, and whenever the current is equal to zero, that means you have to get the open circuit. Now it's depend whether you have to short circuit the input port as well as the output. It all depends what type of signal will be available in your equation. For example, if you get V1 0, that means you have to short circuit the input port. And if you get a V2 is equal to 0, that means you have to short circuit the port 2. And similarly, in case of current, but in case of a current, you have to get open circuit port 1 and the port 2. Now, based upon the same thing, we will discuss about the G parameter. Now, see, the basic equation of the G parameter is I1 V2 is a function of V1 I2. That means G parameter, we have the basic equation input current, output voltage is a function of input voltage and output current. Same terminology, same standard I can use. I can convert this equation into a matrix form. Now here it is a matrix form. It is a function. It is a V1 and I2. Now again, in order to change the concept of proportionality, we are putting certain parameter. Now here I can substitute the G parameter, and a G parameter is basically combination of four parameters, that is G11, G12, G21 and G22. Now you can see your I1 and V2 is equal to G11, G12, G21, G22, V1 and I2. Now I can open that equation. When you open, your becomes I1 is equal to G11 V1 plus G12 I2. V2 is equal to G21 V1 and plus G22 I2. The reason being, when you have to get the matrix multiplication, the rows into column, that means this row is multiplied by this column
So you can get equation number 1 and equation number 2. Now again you can see in this equation number 1 and in this equation number 2, the signals are this V1 and this I2, and here again the V1 and I2. That means once we have to get this V1 equal to 0 and another we have to get this I2 is equal to 0. Now when the voltage is equal to 0, that means short circuit, and when current is equal to 0, that means open circuit. That I had tell you in a my previous lectures also. Now let us suppose V1 is equal to 0, that means short circuit. Now when you substitute V1 is equal to 0, equation becomes I1 is equal to G12 I2. So from that equation you can easily get the value of G12 as seen. So here what is G12? This G12 is equal to I1 upon I2. So you can say that G12 is basically the ratio of input current to the output current. And similarly, your G22 is equals to V2 upon I2. Again, when you substitute V1 is equal to 0 in second equation. So from that equation, when you substitute the input voltage is equal to 0, that means when you substitute the the input port as a short circuit, you are getting G12 and G22. Now, in the similarly, I can substitute I2 is equal to 0. Now that means you know when current is equal to 0, that means it gets open circuited. Now when I substitute I2 is equal to 0, you are getting G11 that is V2 upon I1 and G21 that is V2 upon V1. Hence, you can say that your G parameter basically a combination of 4 parameter, that is G11, G12, G21 and G22 is equals to V2 upon I1, I1 upon I2, V2 upon V1 and V2 upon I2. So I think this derivation related to the G parameter is now clear to all of you. Is it clear? Yes, sir. Okay. So we are left with only the last derivation, and again the last derivation is something called as your H parameter, which is also called as hybrid parameter. Same thing that we can use in our last 5 derivation, the same cheese we can use in the same again in this parameter, but again the basic equation for this parameter is different. So now here the basic equation is V1 I2 is a function of I1 V2. So from that equation, you can get V1 I2 is a function of I1 and I2. You can open it. Then V1 I2 is equals to H11 12, H21 H22 into I1 into V2. Now again, when I multiply, get the matrix will be open. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Now again, you can see in this equation and in this equation, here you have I1 and here you have V2. Now first of all, we can substitute this I1 is equal to 0, and after that we can substitute this V2 is equal to 0. Now when I can substitute this I1 is equal to 0, that means current is equal to 0. Current means 0 means open circuit. So see, you can get the two parameter, that is H12 is equals to V1 upon V2, and here I2 is equal to H22 V2 and H22 is equal to I2 upon V2. So when you substitute I1 is equal to 0, or when you open circuit the port 1, you are getting the two parameters. Now here you can getting the two parameters. Now next, what will happen when substitute V2 is equal to 0? When you substitute V2 is equal to 0, that means short circuit, port 2, and again you are getting the two parameter, that is H11 and H21. So when you combine all these values, you can get H parameter is equals to V1 upon I1, V1 upon V2, I2 upon I1, and I2 upon V2. So this is basically called as your H parameter. So with this, you have discussed all the 6 parameter, that is Z parameter, Y parameter, ABCD parameter, inverse ABCD parameter, G parameter, and H parameter. But you need not to be crammed this type of, you can say that the derivation, you are not cramming this type of derivation. Only one thing that you have to be remember while solving these parameter, that you should know what is the basic equation. So in next slide, I will show you what is the basic equation of all the parameter, and these 6 equations you have to be write it down, or these 6 equations
You have to be remember it out. So I will give you a technique that how you can calculate the parameters. For example, if you have a y parameter, you must know that this y parameter is basically the combination of four parameters: y11, y12, y21, y22, and how this y11, y12, y21 and y22 can be calculated. Now I will give you certain technique, and with the help of this technique you can easily understand that how these parameters can be calculated. But again I will tell you, by knowing the value, that how this value can be calculated, the first and the foremost important thing is that thing, every parameter has its certain equation, and you people must understand, or you people must we can say that learned by heart, that what is the basic equation, what is the basic equation of that particular parameter, उस particular parameter की basic equation क्या होती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपको ये चीज याद है, आपको पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. आई विल टेल यू कि आप सिंपल एक इक्वेशन को याद करके इस तरीके से डेरिवेशन कंटिन्यू कर सकते हैं. क्लियर? So up till anybody having any doubt, he or she can tell me, otherwise I will start continuing it. Yeah, tell me, anybody having any doubt, or I will continuing it? To continue. Okay bache, now you So can continue. okay bache, now you can see just like you have a first equation that is called as z parameter. Clear? Now every parameter, whether it is a z parameter, it is a y parameter, it is an abcd parameter, and it is inverse abcd, it is g, it is h, every parameter is having a certain equation, every parameter. Now you people must remember this basic equation, that in case of z it is v1 v2 i1 i2, in case of y i1 i2 v1 v2, in case of abcd v1 i1 v2 minus i2, in case of inverse abcd v2 i2 v1 minus i1, in case of g i2 v2 i1 v i1 sorry v1 i2, and in case of h it is v1 i2 i1 v2. Clear? So these are the basic six equations that you must be remember it out. Clear? Second thing, you all know every parameter has its certain four different values. For example, if I talk about z, z is a combination of four another things, that is called as you can say that z is called as z11, z12, z21, z22, y is called as y11, y12, y21, y22, abcd is called as abcd, inverse abcd is a inverse, b inverse, c inverse, d inverse, g is equal to g11, g12, g21 and g22, and h is equal to h11, h12, h21 and h22. Clear? Now you must see on an extreme right hand side there is certain a value, that is i1 and i2, isn't it? Every equation has its value. This is i1 and here it is called as the i2. Now आप लोगों को क्या करना है, जब भी पैरामीटर्स निकालने हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज लिखी हैं इनको जीरो करना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर, इन एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, और आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि एक बार v1 को जीरो करना है, एक बार i1 को जीरो करना है. जब आप v1 को जीरो करेंगे आपके दो पैरामीटर्स निकलेंगे, जब आप i1 को जीरो करेंगे आपके दो पैरामीटर्स निकलेंगे. और अगेन V1 वोल्टेज जीरो करने का मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट I1 जीरो करने का मतलब ओपन सर्किट. One stands for input and another stands for output. Clear जी? Now you see, let it be taken example of H parameter. आपको H parameter की इक्वेशन याद रखनी है. After that इसको I will tell you कि किस तरीके से इसको चलाना है. पहले इक्वेशन आएगी, फिर इसका मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, फिर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटके H आएगा, H की चार वैल्यूज होंगी, इक्वेशन को ओपन करेंगे. जब आप इक्वेशन को ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड में i1 और v2 होगा. एक बार i1 को जीरो करोगे, एक बार v2 को जीरो करोगे. जब आप i1 को जीरो करोगे आपके दो पैरामीटर्स निकलेंगे, जब आप v2 को जीरो करोगे आपके दो पैरामीटर्स निकलेंगे. और ये सेम टेक्निक आपके सभी के सभी पैरामीटर्स में फॉलो की जाएगी. कोई भी पैरामीटर आप ले लीजिए, सभी के सभी आपके पास क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा. क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? Anybody having any doubt? No, sir. किसी को कोई डाउट है यहां तक तो मेरे से पूछ सकता है. बिकॉज हेयर वी आर डिस्कस्ड अबाउट ऑल द पैरामीटर्स. पैरामीटर्स में
क्या क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 तक दे दिए हुए हैं, और वो चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली यही चीज थी। सिर्फ फर्क क्या है कि हमने थ्योरेटिकल करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है जब हम उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? नो सर। सो अगर मैं अब आपको बोलता हूं कि मुझे एबीसीडी पैरामीटर का डराइव करके दीजिए, तो आप लोग कर सकते हैं? अगेन आई विल टेल यू, डोंट क्रैम इट, इक्वेशन को क्रैम मत करिए, रट्टा मत मारिए कि कैसे डेरिवेटिव निकालना है। सिर्फ क्या याद रखना है, इक्वेशन, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो जो वैल्यूज है वो आपकी जीरो होती जाएंगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। यस सर। So shall I continue next? Yes sir. Shall I continue next? Okay. Okay, fine. Now I will continue the next. Now, tell me one thing. After seeing this equation, मुझे एक चीज बताइए, z की इक्वेशन क्या है? v1 i v2 is a function of i1 i2 है बच्चे? Yes, sir. और y की क्या है? i1 i2 is a function of v1 v2 है बच्चे? Yes. Yes, sir. Okay. Now you tell me, क्या z और y आपस में रेसिप्रोकल है या नहीं है? ये आप लोगों ने BEE में भी पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में वर्मा सर ने भी आपको बताया होगा। AC फंडामेंटल्स में there is a term called as Z, which is called as impedance, and this Z is basically called as ratio of voltage upon current. For example, if you talk about resistance, in case of resistance, that is R in DC, it is V upon I. But same thing, it will be in AC. R is changed by Z, and is Z is equals to V upon I. Isn't it बेटा? होता है? होता है या नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Y क्या है? Y इसका रेसिप्रोकल है। That means अगर Z आपका जो है वो है वोल्टेज अपॉन करंट, तो फिर Y क्या है? That is the reciprocal of Z. वो क्या है? करंट अपॉन वोल्टेज। Now what I have to do, we are getting one interrelation. In interrelation, you see, what is the interrelation? Interrelation says Z parameter in terms of Y parameter. अब मुझे क्या करना है? Z पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर निकालना है कि Z का Y के साथ क्या रिलेशन है। So उसके लिए अगेन वी हैव अ डेरिवेशन। यू सी व्हाट आई हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, Z की बेसिक इक्वेशन मैंने लिख ली, दैट इज V1 V2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2। अगेन मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया जैसे मैं करता आ रहा हूं, दैट इज V1 V2 इज इक्वल टू Z I1 I2। मैंने मैट्रिक्स को खोल लिया, V1 V2 इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2। अगेन मैंने मैट्रिक्स को खोल लिया, दैट इज V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2। So you got equation number 1 and equation number 2। यहां तक अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल Z पैरामीटर को ड्राइव करना शुरू किया। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे निकालना है y। सो मैंने क्या किया बच्चे, y की इक्वेशन लिख ली। y की इक्वेशन कहती है I1 I2 is a function of V1 V2। So what I have to do, I1 I2 is equal to y V1 V2, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन को ओपन कर लिया। I is equal to V11 sorry Y11 V1 plus Y12 V2, I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2। Now up till stage you are getting the 4 equation, 1 and 2 equation for the Z parameter, and 3 and 4 is the equation of the Y parameter. Now see, Z is called as impedance, Y is called as admittance. That means I had already tell you that Z is equal to reciprocal of Y. So you can say that Z is equal to Y inverse or Z is equal to 1 upon Y. होता है बच्चे? Because I had already tell you Z is equal to V upon I, voltage upon current, and your Y is equal to I upon V. That means if you get a reciprocal of Z, you are getting a Y. Clear? See? Now you can see Z is a combination of 4 parameters, that is Z11, Z12, Z21, Z22, and Y is also the combination of 4 parameters, that is Y11, Y12, Y21 and Y22. So that means the whole matrix of the Z is equal to the whole matrix of the Y with the inverse. Clear? Clear?
Yes, sir. Okay, so when you remember mathematics, if a matrix is getting a inverse, अगर आपको एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला कहता है adjoint upon determinant. So अगर आपको y का निकालना है इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? Adjoint of y upon determinant of y. So what I have to do, determinant of y, that is del y11 y22. determinant कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई y11 y22 minus y21 y21, ये मेरा डिटर्मिनेंट निकल गया. और एडजॉइंट कैसे निकलता है? इंटरचेंज करिए इन दो पैरामीटर्स को, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. सो दैट मींस एडजॉइंट इज y22 minus y12 minus y21 and y11. सो यहाँ पर ये निकल गया इसका डिटर्मिनेंट और ये निकल गया इसका एडजॉइंट. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट और द एडजॉइंट? किसी को कोई पूछना है डिटरमिनेंट कैसे निकाला मैंने या एडजॉइंट कैसे निकाला? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग. सर एक बार ये डिटरमिनेंट बता देना कैसे निकाला, रिपीट कर देना. देखिए बच्चे, डिटरमिनेंट मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूं, देखिएगा आपके पास y पैरामीटर क्या होता है? y11 y12 y21 and y22 होता है. y के चार पैरामीटर्स होते हैं ना, y11 y12 y21 y22 होता है. अब अगर आपको y पैरामीटर का इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y. मतलब इस y मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालिए और डिटर्मिनेंट भी निकालिए. सो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? दिस थिंग इनटू दिस थिंग माइनस दिस थिंग इनटू दिस थिंग करते हैं ना. डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? यस सर. दिस थिंग इनटू दिस थिंग माइनस दिस थिंग इनटू दिस थिंग. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई y11 y22 माइनस y21 and y12, ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट. दिस इज del y which is denoted by determinant of y. Clear? Yes sir. And what is the adjoint of y? Adjoint of y means जिन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दीजिए. y11 की जगह y22 आ जाएगा, y22 की जगह y11 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए. दैट मींस एडजॉइंट ऑफ y क्या आ गया? यहाँ y22, यहाँ y11, और यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ओरिजिनल में यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था. ठीक है बच्चे? यस सर. तो मैंने यहाँ पर एडजॉइंट निकाल दिया, ये एडजॉइंट निकल गया. नाउ z इज इक्वल टू y इनवर्स. सिंपल. सो z क्या है? z11 z12 z21 z22 इज इक्वल टू y इनवर्स. y इनवर्स क्या आ गया? y22 minus y12 y minus y21 and y11 upon del y, isn't it? So here what is z11? This is the value. z11 z12 z21 z22 is equal to y22 upon del y minus y12 upon del y, y21 is equal to minus y21 upon del y, and z22 is equal to y11 upon del y. So here what you have to do, you have simply calculated the value of z parameters in terms of y parameter. So z पैरामीटर का और y पैरामीटर का क्या रिलेशन है आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया. दैट मींस z11 निकालने के लिए अगर आपको y पैरामीटर की हेल्प लेनी है, तो z11 की वैल्यू क्या होगी? जो y22 की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके डिटरमिनेंट के साथ. जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी. बट अगेन फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड नॉट टू बी गेट क्रैम्ड कि यार ये इक्वेशन कैसे आई कैसे नहीं आई. You simply have to be derive that equation, and once you can derive that equation, you can easily understand कि z11 किसके बराबर है, z12 किसके बराबर है, z21 किसके बराबर है और z22 किसके बराबर है. So up till stage you are covered with z11 क्या है, z12 क्या है, z21 क्या है और z22 क्या है. Clear है बच्चे? So it is clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So with the last today's lecture of the last derivation, now I have to get reverse. What do you mean by this reverse? Reverse means now you have to calculate y parameter in terms of z parameter. इससे पहले मैंने क्या किया? इससे पहले मैंने z को y की टर्म्स में निकाला. अब मैं क्या कर रहा हूं? y को z की टर्म्स में निकाल रहा हूं. तो it is a simple process. कुछ नहीं करना है, जो आपने ऊपर किया है वही चीज हम करेंगे. अगेन पहले y को निकालना है, तो y की इक्वेशन देखिए, सेम वही चीज. क्विकली आई विल डू विद दिस थिंग. y की इक्वेशन बन गई आपके पास 1 2. उसके बाद आपको z का लेना है, तो z की इक्वेशन बन जाएगी 3 4. यू सी 3 4. नाउ
पहले मैंने क्या किया था, z इन टर्म्स ऑफ y किया था, तो z को कहा था y इनवर्स। अब मैं कर रहा हूँ y इन टर्म्स ऑफ z, तो y क्या होगा, z इनवर्स। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन z, y इज इक्वल टू y11 y12 y21 y22, तो z का ये इनवर्स। अगेन जब मुझे z का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ z। एडजॉइंट ऑफ z वही, that is z11 z122 minus z12 z21 and determinant is equal to z22 यहाँ गया, z11 यहाँ गया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। सो अगेन y11 वैसे निकाल दिया, तो सिंपली here you have y11 is equal to z22 upon del z, y12 is equal to minus times z12 upon del z, and y21 is equal to minus z21 upon del z, and y22 is equal to z11 upon del z. So with this you can cover that how the y parameter can be discussed in terms of z parameter, and how the z parameter can be calculated in the terms of y parameter. I hope you can now understand in a better way that what is the interrelation between these two parameters, how a y parameter can be calculated in terms of z parameter, and how the z parameters can be calculated in terms of y parameter. Clear hai? Anybody having any doubt? Yeah, anybody having any doubt? No, sir. Okay, now I will put this video on a YouTube, and after that I will provide you the link of this video. Also, I will provide you the study material related to the 2 days lecture in your WhatsApp group. It's a humble request to all the students to be present there. Please go through the study material and try to solve this type of derivation in your notebook at your places. Because once you can get these derivation on your notebook, you can understand in a better way that how these parameters can be derived, and how the interrelation between the z and y parameter will be occur. You can try to solve these equation at your notebooks at your places with the reference that I will provide you the study material. And after that you can watch this video, and if anybody having any doubt again related to that particular topic, he or she tell me, put a message on the comment box, and also message me in the WhatsApp. I will try to solve the issue as soon as possible. Clear? Clear बच्चे?